Good morning, students. My name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, start with the new chapters. We seen the last lectures. In the last lectures, we will learn about the role of civil society, national plan and policy on disaster management, and role of engineering in disasters. So, role of civil society in the disaster management or the state of entities to be effective involvement of the local community is very important, and it is only possible if the community are engaged in the process of planning and decision making. यानी कि सिविल सोसाइटी में जब सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी और लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है, यानी कि एनजीओ है या ऐसे संस्था के जहाँ पे वो लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो लोग को किस तरह का प्लानिंग है और कुछ डिसीजन मेकिंग उन लोगों को अथॉरिटीज़ देनी पड़ती है. सो इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मस्ट concentrate on the first one is the community based disaster preparedness and the development of block, ग्राम पंचायत and village disaster management plan. यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि उन लोगों ने जो कम्युनिटी वाइज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपेयर्डनेस की जो पूरा प्लान किया है वो, और उन लोगों को अलग अलग ग्राम पंचायत या विलेज या उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग करके और डेवलप करके उन लोगों को प्लान समझाना पड़ता है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर्स the emergencies during the times of wars and emergencies, the civil defense organizations has the dynamic role of the grading, the supporting and helping the civil administrations and armed force mobilizing and the citizens and saving the life and properties. जैसे ही अभी हमने देखा था कि जब सुनामी है या कोरोना है तो जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो किस तरह से हेल्प करती है गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी बचाने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए, अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि फूड की रिक्वायरमेंट है या जिस भी रिक्वायरमेंट है वो. वो वॉर या इमरजेंसी में हेल्प करते हैं. एंड द सिविल डिफेंस पॉलिसी and the coordinating and the supervising measures they implement it to union home ministers, home secretary and joint planning staff committees. So there are three different parts are involved for the civil defense. So the contributions of the corporate sector has been notable, especially in the aftermath of the devastating. यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका भी एक ऐसा रोल्स होता है कि जहाँ पे डिज़ास्टर होने के बाद जो जो नुकसान है उसकी रिकवरी करने के लिए हेल्प करती है. सो ड्यूरिंग द कोसी फ्लूड एंड द आंध्र प्रदेश एंड द कर्नाटका फ्लूड्स इन 2008 एंड 2009 रिस्पेक्टिवली. तो ये जब 2008 और 2009 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जब फ्लूड्स आया था तब ऐसे जो कॉरपोरेट सेक्टर थे वो उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था. एंड इनएलिजिबल पार्ट्स ऑफ इट्स कॉरपोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. The corporate sector can be play an essential role in leading and supporting the communities. So, common inventory of the disaster response
resources so that one could easily find the machines in aftermath of the disasters. So alternating and the cost effective technologies for the hazards research and development in the hazard preventions and the mitigations, supporting and the population's traditions and indigenous disaster mitigations. Corporate sector can also play a useful role before the crisis by supporting the disasters. Now, the national policies in disaster management. So, national policy on the disaster management has been approved by the central government on October 22, 2009 and circulated to all over concerned. यानी कि जो नेशनल पॉलिसी इन डिजास्टर प्लान है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसकी शुरुआत 2009 में अक्टूबर में की गई थी और उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में उसकी स्थापना हुई. So the policy covers all the aspect of the disaster management, including the institutional and the legal arrangement, financial arrangement, disaster preventions, mitigations and the preparedness, technology, legal rules, research and developments. So these are the considers as a play a role of the national policies on the disaster management when the disaster arise. So if the focus on the area where the action is needed and the institutional mechanism through which such actions can be channelized. So it aims to bring in the transparencies and the accountability in all aspects of the disaster management through involvement of the community and community-based organizations. So national plan disaster management have the institutional mechanism for the preparedness of the national plans has been in place, which is under the preparedness in a three parts: national responsible response plan, national mitigation plan and national capacity building plans. So now start with the what is the importance of the engineers in the disaster management. So we can start with the civil engineers. हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर्स का मोस्ट ऑफ ऑल रोल रहता है जब सुनामी या अर्थक्वेक या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है तब. So now the first rule of the civil engineer is planning and setting up and the maintenance of the emergency relief camp, then the provisions of the sufficient manageable water supply, then provisions of the hygienic sanitation facilities to the people affected, then reconstructions the basic infrastructure facilities, for example road, bridge, railway lines, then buildings and etc. The geotechnical and the structural engineer is responsible for the design and the constructions of the earthquake resistant structures. Then after the role of the electrical engineers, so the constructions of drone and the helicopter for easy transportations of the food packages, then electrical engineer managed to provide the electricity to the disasters hit area from every recovery. Then after the power cut off and control during the heavy rains and the flood is ensured by the electrical engineers and arrange of the electric motors and the generators for water supply in the drought prone area. Now the role of the NGO in the disaster management. So NGO can be considered as the middleman between the grassroots communities and the government, and the NGO are one of the most effective means of the achieving an efficient community link between the disaster management and the agencies and the affected the community. Now the NGO can also work towards
reducing the vulnerability through the training, education, and camping. And the NGO plays a dynamic role in the relief and the rescue operations after the disaster. So, the last lectures we will see these topics. Now, the today's topic is, so start with the chapter number 5, last chapters, the applications of the science and the technology for disaster management. And the topic is role of technology in the disaster management. So basically information technology यानी कि IT is changing the every aspect of the human life and it play a crucial role in the disaster management. The advanced technology of the IT, the advanced role of the IT such as the remote sensing, satellite communications, GIS, etc. can help the planning and implementation of the disaster management. So as we know that the information technology is changing every aspect of life. So in the सैटेलाइट, जैसे कि हमने देखा कि द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द डिजास्टर मिटिगेशंस कम्युनिटीज वर्क टुगेदर इन डेवलपिंग द इफेक्टिव एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ प्रिवेंशंस, प्रिपेयर्डनेस एंड द रिलीफ मेजर्स. यानी कि हम जो भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप कर रहे हैं वो डिजास्टर आने से पहले हम किस तरह से टेक्नोलॉजी और डिजास्टर्स को कंबाइन करके ऐसी हम डेवलप करते हैं कि उससे बहुत कम से कम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कम से कम वो अफेक्ट कम हो. सो द डिजास्टर प्रिवेंशन इज द लॉन्ग टर्म फिनोमिना विच कैन बेस्ट बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऑफ various relevant factors such as the changing the land use. Then disaster preparedness focus on the warning and the forecast of the immediate disasters and often the process which are quite dynamic and the rapid onset disaster. यानी कि ये जो टेक्नोलॉजीज है उसको वार्निंग देने में, देन आफ्टर दी प्रिपेयर करने में, देन अलग अलग फैक्टर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चेंजिंग लेड यूज़ करके, यानी कि अगर ड्रग है या होगा तो उसका हम कर सकते हैं प्रिवेंशन. द ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन द वार्निंग एंड द फोरकास्ट इज दैट द लेटर इन द लेस स्पेसिफिक इन द टाइम एंड स्पेस, so that the disaster relief occurs after the emergencies. And the important aspect term the satellite monitoring involves the assessment of the damage incurred during the disasters. So the satellite technologies can also help the identifying the aspect route at the locations for the storage of temporary housing. The pressures on the earth resources caused by the increase the populations has result in increase the availability of the human and then infrastructures to the natural hazards. यानी कि हम कहीं जगह पे देखते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हो सकता है या बिल्डिंग नहीं हो सकती है, जो सैटेलाइट थ्रू पूरी तरह से हमने स्टडी किया होता है कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो या ऐसी जगह पे या बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो पूरी ऐसे हम मेजर कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है. सो द रिमोट सेंसिंग और द अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, this is called the EOS and the GIS, are among the many tools available to disaster management professional today, making the effective project planning very much possible and more accurate. So using of these technologies,
None of the existing satellite and their sensors has been designed solely for the purpose of the observing and the natural hazards. The verifying of the special bands of the VIS यानी कि visibles, then after the NIR near infrared, then infrared, then short waves, infrareds, then thermal infrareds, and the SAR means the systematic aperture radar provide the adequate specific coverage and all the computer enhancement of the data. यानी कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे ही अलग अलग के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है, विजिबल है या नियर इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव्स है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को मॉनिटरिंग करके हम ये कर सकते हैं. सो इन द डिजास्टर मैनेजमेंट द एम ऑफ द एस्पेक्ट has been to monitor the situations and simulated the complicated natural phenomena as accurately as possible, so to come with the better predictions models. So now हमने देखा कि what is the role of the technologies, generally satellite किस तरह से यूज़ होता है वो देखा. So now the remote sensing technologies. सो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि क्विकली असेस्ड एंड द सेवरिटी इम्पैक्ट ऑफ द डैमेज ड्यू टू द फ्लूडिंग अर्थ क्विक्स ऑयल्स एंड स्प्लिटिंग द अदर डिजास्टर्स एंड द प्लानिंग द इफेक्टिव स्पेक्ट रूट ऑफ द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द ह्यूरिकल सेंस. सो द कैरेक्टरिस्टिक क्विक route for the ambulance to reach the victimity. यानी कि जो हम रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में जब अर्थक्वेक या सुनामी होता है या फ्लूड्स होता है तो इजीली उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर दी सन्स एंड द energy sources, then after the atmospheric infrared to target the interactions, then after the energy detections यानी कि रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो ट्रांसमिट करता है डेटा रिकवरी प्रोसेस में, एंड देन वो देता है डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड द एनालिसिस एंड देन आफ्टर द एप्लीकेशन. सो ये किस तरह से प्रोसेस होता है. So the source of the illuminations means to provide the electromagnetic energy to the target of the interested. Then after the atmospheric की बात करें तो media by which the energy travel from and to target, and the C part is the interactions with the target. After passing through the atmospheric, the energy interact with the target depending on the properties of the both the target and the energies. So the role of the energy by the sensors यानी कि जो सैटेलाइट है after the emergence energy has been scattered by or emitting from the target, the sensor collect and the recorded the received energy. Then after the transmit, receptions and the processing, the energy recorded by the sensors has been transmitted to the receiver and the processing these stations where the data are processed into the image and the interruptions of the analysis यानी कि F. The processing image is interpreted visually and the digitally to accept informations about the target, and the last one is the applications in the form of the map, GIS and decision. So these are the basic transmit the data from the remote sensing technologies. So the different sensor can be provided unique informations about the properties of the surfaces or shallow the layer of the earth. So for example we can discuss about the measurements of the
are reflected solar radiations given the informations on the albedo or the fractions of the light that reflect by the body. Thermal sensors measure the surface temperatures and the microwave sensors measure the dielectric properties and hence the moisture content of the surface of the soil, which remote sensing and it continue to develop has the added new techniques that disaster management expect can use in the large number of applications. So now the method of the remote sensing technologies, basically there are the four type of remote sensing technologies: the photo emerging or the areas photographic, then after the thermal and the multispectral scanning, microwave remote sensing and the earth resources satellites. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोग्राफी आर टेकन फ्रॉम द एरोप्लेन्स एंड दी, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एरोप्लेन्स थ्रू हम फोटोग्राफी करते हैं, when the distance and the involvements can be obtained by geometry and the simple equipments, यानी कि अभी हम ड्रोन यूज़ करते हैं फॉर द सेंसिंग्स. Then after the thermal multispectral scanning, so thermal scanning is used for to measure the radiant temperature on the earth surface and the distance and the thermal waves, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. Then after the microwave sensing, if the microwave radiations, the microwave are capable to preventing atmospheric under the all auditions of the rain, cloud, snow, smoke etc. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थर्मल टेम्परेचर थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं, then microwaves remote sensing through and the earth resources satellites. In this method the space borne sensors mounted on the satellite are used to study the earth features, for example INSAT in India and the Landsat in USA. ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं वो यूटिलाइज होता है. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशंस, जैसे ही हमने देखा फोटोग्राफी, तो किस तरह से फोटोमेट्रिक और द एरियल फोटोमेट्रिक्स होता है. तो इस तरह से प्लेन थ्रू पूरा स्ट्रक्चर्स जो है लैंड है वो सेंसिंग करते हैं. देन आफ्टर द थर्मल एंड द मल्टीस्पेक्ट्रम स्कैनिंग, तो थर्मल और मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेज़र होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इमेज है जैसे कि एक लेक की है, तो वो थर्मल इमेज इस तरह से देते हैं जैसे कि ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी है और यहाँ तक वो फैला हुआ है. देन आफ्टर द माइक्रो रिमोट सेंसिंग, सो माइक्रो रिमोट सेंसिंग में इस तरह से वेव रिमोट सेंसिंग होता है थ्रू, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल असिस्ट है एंड RF सेंसिंग है. एंड द लास्ट वन इज़ द अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, तो एक सैटेलाइट थ्रू जो हम करते हैं वो. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द रिमोट सेंसिंग, द फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द फ्लड, साइक्लोन, अर्थ landslide etc, it become possible to pinpoint the area where the immediate actions is required. Then after the disaster prevention measurement can be improved through the satellite technology. During the relief operations the satellite data can provide the informations. Then after the landslide can be prepared, predict and detecting using the satellite. Remote sensing is also very useful in the case of the flood. Now the role of the GPS in the disaster management. So basically GPS is the grouping of the 24 satellite well displayed that orbit of the earth
and provide the accurate locations of the people on the earth with ground receive the GPS providing the three-dimensional coordinates of the point on the earth. So officially name of the GPS is the navigation satellite timing and the ranging the global position systems. It means the GPS is the global positioning systems, and basically the now star GPS systems is used. So you can see here in the earth there are the 24 different satellites will be rotations in the orbit of the earth. So the global position systems is the form of the global navigation satellite systems and the first development of the United States Department of the Defense. So there are the 24 GPS satellites in the medium earth orbit and the region of the space between the 200 kilometers and the 35,786 kilometers. Now what is the applications of the GPS? So pinpoint the locations of the damaged site. Then after the pinpointing the locations of the flood plains, then GPS give the exact locations of the point on the earth. The GPS is useful in the tracking emergency vehicles and the supplies. Then GPS unit are fixed to beyond, and the height of the waves in a sea can be monitored. Volcanoes can be monitored during the GPS. Then GPS provide the location of people, fire, rescue vehicles during the emergency situations. So these are the applications of the GPS. If any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can contact me. My contact number and the mail ID is seen in your screen. Thank you.